पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज बेटी के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। आप में से कुछों की बेटियां होंगी, कुछों की नहीं होंगी। बेटी रहमत होती है, बेटी नेमत होती है। और पाकिस्तान में माशाल्लाह से जो पाकिस्तान की 250 मिलियन पॉपुलेशन है उसमें मेजॉरिटी मैं कह सकता हूं कौम की बेटियां ही हैं। इन कौम की बेटियों ने मुल्क को बनाया, इसमें कोई शक नहीं कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनकी बहन फातिमा जिन्ना ने एक अहम किरदार अदा किया और जब से लेके अब तक women have played an important part in Pakistan's independence, different democratic movements, even war. जंग में भी औरतें, हमारी बेटियां जो हैं वो उन्होंने हिस्सा लिया है। Of course, खवातीन को टारगेट किया गया है। पाकिस्तान हैज वन ऑफ द वर्स्ट जेंडर इक्विटी रेशियोज इन द वर्ल्ड, इसमें कोई शक नहीं है और देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। मगर हम वही मुल्क हैं जिसने पूरी दुनिया की पहली मुसलमान खातून को वोट देके याद दिलाता चलूं, वोट देके इलेक्ट किया था। मगर लगता है वो कोई और पाकिस्तान था, अब कोई और पाकिस्तान है। 60s में खवातीन ने डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हिस्सा लिया। 80s में इन्होंने छितर खाए, जेल काटी। ऑफ कोर्स 2000s में वायलेंस देखा। इवन बेनजीर, वही औरत जिसे हमने इलेक्ट किया था, उसे हम ही ने कत्ल कर दिया। मगर अब कत्ले आम होने लग गया है। सिर्फ खवातीन को टारगेट नहीं किया जाता सेक्सुअली, फिजिकली, क्रिमिनली, मगर अब खवातीन को पॉलिटिकली भी टारगेट करना शुरू हो गया है। ये बहुत पहले से हो रहा है, मगर अब शायद ही कोई खातून हो इस वक्त के पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक मूवमेंट में। और कोई शक नहीं है कि वी आर इन द मिडस्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट। कोई और खातून नहीं है एक के अलावा जो अब सिंबल बन गई है शहरियों की प्लाइट का, शहरियों की इज्जत का, और उसका नाम खदीजा शाह है। खदीजा शाह पाकिस्तान की लीडिंग डिजाइनर है। शी इज अ मदर ऑफ 3। अभी मैं फुल डिस्क्लेमर मुझे बताना चाहिए, कहना चाहिए कि खदीजा शाह को मैं खुद बचपने से जानता हूं। इधर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, इधर हम दोनों साथ पढ़े हुए हैं। साल 1.5 साल मेरे साथ खदीजा पढ़ी और आगे निकल गई, बहुत आगे निकल गई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की और फिर वापस जब पाकिस्तान आई, उसने अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया। और फिर चलते चलते पॉलिटिक्स में डायरेक्टली तो नहीं इन्वॉल्व हुई, बट एज अ सिटीजन बहुत एक्टिव हुई। May 9 के इंसिडेंट में वो ऑन द ग्राउंड थी, मगर जो May 9 में हुआ दीगर खवातीन के साथ हुआ, खदीजा आज उसका टारगेट बन गई है। 4 या 5 बार बेल्स हुई हैं खदीजा की, 4 या 5 बार उसे रिहा किया गया है और फिर 4 या 5 बार उसे अरेस्ट किया गया है। कल जो उसकी फाइनल बेल हुई है, उसके बाद एक बार फिर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत अब उसे अगले 30 डेज तक फिर अरेस्ट कर लिया गया है। खदीजा को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसकी सिंबलिज्म आपके लिए बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी क्या है? क्या ये कोई पर्सनल वेंडेटा है? कहते हैं कि शरीफ खानदान के दीगर जो लीडर्स हैं उन्होंने इसका नाम लेके, खदीजा का नाम लेके जलसों में इधर उधर बोला है कि हम इसे नहीं छोड़ेंगे। खदीजा के जो फैमिली कनेक्शंस हैं, आसिफ नवाज जंजुआ फॉर्मर आर्मी चीफ, उनकी वो नवासी हैं। क्या ये कोई मसला है, या आपको, आपकी बेटियों को, आपकी बहनों को, आपकी माओं को, आपकी बेगमात को डराने के लिए ये कोई ज्यादा बड़ी साजिश है? मोर देन वी अंडरस्टैंड। मैं अकेला इन सवालों का खोज नहीं लगा सकता, मुझे मदद की जरूरत है और मेरी मदद करने आए हैं समीर खोसा साहब। ही इज अ पार्टनर एट एक्सेस लॉ और ये खदीजा के लॉयर हैं। पिछले 3-4 महीनों से धक्के खाते आ रहे हैं आप खोसा साहब। लाहौर हाई कोर्ट में आप धक्के खाते आ रहे हैं एंड आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला, आज भी आप उधर थे। प्लीज टेल अस व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस केस? क्यों आपकी जो क्लाइंट है उसे ऐसे टारगेट किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद, थैंक यू फॉर हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद मी। देखिए, सिर्फ हाई कोर्ट के हम नहीं गए, एक्चुअली वी वेंट टू ऑलमोस्ट एवरी कोर्ट इन द लैंड। हम एंटी टेररिज्म कोर्ट में जा चुके हैं, वहाँ से शी रिसीव्ड बेल। We've been to the Sessions Court, we've received bail there. We've been to the Magistrates Court where an offence was struck out. हम हाई कोर्ट जा चुके हैं, वहाँ पे हाई कोर्ट में बेल मिल चुकी हुई है। हम हाई कोर्ट एक और केस में गए हुए हैं, वहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है। सो एक्चुअली हम शायद सूबे की और शहर की किसी ना किसी नौयत के मुकदमे में जा चुके हैं। अब
मैं ये जरूर कह सकता हूँ that she is being targeted. So let's look at the facts first. The facts are that she found out that the police is looking for her, and she turned herself in terms of joining the investigation. उनको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, वो she presented herself for investigation, but उनको अरेस्ट किया गया. जब उनकी पहली बेल की हेयरिंग होने लगी, फाइनल हेयरिंग, तो दिस वाज इन मई. उसके बाद जून में जब पहली बेल की हेयरिंग होने लगी तो दूसरा मुकदमा ऐड किया गया. जून के बाद अक्टूबर में फाइनली उनकी हाई कोर्ट से 2 मुकदमों में बेल हुई. हमें तब लगता था कि अब 4-5 महीने हो गए, सिर्फ 2 मुकदमे हैं. हमने हाई कोर्ट में केस किया कि जी इनके खिलाफ कोई और मुकदमा है. उसमें आईजी पंजाब ने रिपोर्ट आके दी कि सिर्फ 2 मुकदमे हैं. उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर हमने भरोसा किया कि जी हमारी दोनों मुकदमों में बेल हो गई है. जिस दिन उनके दूसरे मुकदमे में बेल हुई, उस ही दिन तीसरा मुकदमा ऐड किया गया 18 तारीख को अक्टूबर के. जब उसके अंदर हमने बेल अप्लाई की एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, तो जिस दिन उसके अंदर बेल होने का इम्कान था, उस दिन चौथा मुकदमा ऐड किया गया एफआईए के ऊपर. और फिर एफआईए से भी हमारे सेशन कोर्ट में बेल हुई. एंड 15 तारीख को जब हमारी एंटी टेररिज्म कोर्ट से बेल मंजूर हुई है, तो 15 तारीख को ही, इसकी भी आप ये देख लें टाइमलाइन के, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर 15 तारीख को रिपोर्ट देते हैं और 15 तारीख को ही डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी बैठती है, वो उसके ऊपर इजलास करती है. 15 तारीख को ही उनके मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी हो जाते हैं. 15 तारीख को ही डीसी लाहौर जो है वो ऑर्डर इशू कर देती हैं और उनको 30 डेज के लिए नज़रबंद कर देती हैं. एक इंसान जो कि पिछले 5.5-6 माह से पाबंद सलासल है, जेल में है, हाउ कैन शी बी अ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर? बट अपेरेंटली एनीथिंग गोज दीज डेज. Okay, so that is a tragedy to hear. It's also difficult to understand, but work with me here. पहले तो ये बताएं कि जब आप जाते हैं, जो इतने आपने खाली, मुझसे गलती हुई कि आप खाली लाहौर हाई कोर्ट गए हैं, इतने बाकी सब कोर्ट्स में भी आपने आपने टुडे खाए हैं लगता है, फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म. पर मुझे ये बताएं, when you go into this courtroom, clearly the deck has been stacked against you. अब आप हाउ डू यू एड्रेस दीज जजेस? ये जो कभी मैंने सुना है कभी जज साहब छुट्टी पे होते हैं, कभी जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं वो उनकी शादी हो रही होती है, एक तो ये डिले टैक्टिक्स भी हुए हैं. हाउ कैन यू, समीर खोसा, विद अ स्ट्रेट फेस स्टिल कीप योर कंपोजर and deal with these people, because it clearly looks like that the deck is stacked against your client? Firstly, how do you deal with it? Secondly, why is it stacked against your client this way? So 2 things. One, yes, I think it's accurate to say that the deck is stacked against our client, but also let's look at the facts. Despite that deck being stacked against the client, let's give credit where credit is due. Any court of law eventually has to look at the evidence before it. So the deck is stacked from the prosecution side, where they tried for delaying tactics, but anytime the prosecution evidence has been examined, anytime we've been heard on the law, the courts have looked at the evidence and the courts have called the prosecution out and the courts have granted her bail. So we must look at it objectively. ये बात सही है कि there is a lot of tactics that are involved. कभी प्रोसिक्यूटर नहीं आते, 4-5 हेयरिंग्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं पेश किया जाता. देन एक आला अदालत है, हाई कोर्ट कहता है कि रिकॉर्ड तो आप कम से कम पेश कर सकते हैं. देयर इज अ राइट टू अ हियरिंग एट लीस्ट. व्हेन द हियरिंग हैपेंस वी डू गेट आवर बेल. So that's I guess the bright side, if one was to look at it, that when anytime the evidence is examined and the case is examined on the merits, the judges of the courts and the courts of the land are willing to pass the order. The real tragedy is actually that it is the orders of the कोर्ट बेल देता है. यू थिंक दैट आप एक कोर्ट को स्टेटमेंट देते हैं, दीज आर हाई ऑफिसर्स, द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, द प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट. स्टेटमेंट्स मेड टू अ कोर्ट ऑफ लॉ हैव सम सैंक्टिटी अटैच्ड टू इट. वो आपकी और मेरी बात एक और चीज होती है, जब आप अदालत में कोई स्टेटमेंट देते हैं उसकी एक और वैल्यू होती है. तो स्टेट कोर्ट के ऑर्डर्स की एक खुले आम खिलाफ वर्जी करना, उनको डाइवर्ट करना, उनको अमल में ना आने देना, ये एक सही खिलाफ वर्जी है. एंड आई मीन ऑफ कोर्स इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बट फॉर एनी सिटीजन आप कहाँ जा सकते हैं? अब जहां तक रही द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वाज व्हाई इज दिस हैपनिंग. हाँ, look, some of it is speculation, okay?
some of it is actually other people are better placed to answer it. We all tend to have a theory of why it is happening. It's probably a combination of it all. Again, let's just dissect the facts. What are the facts? Every time we do it, हम अगर सोशल मीडिया या मीडिया की बात करें, खतीजा के खिलाफ अगर बात होती है, तो वो there's a particular cadre or people of journalists or what do you call it, opinion makers who saw a particular thing. And it's important for me to clarify one thing. बार एक बात पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश की जाती है कि जी खतीजा ने स्टेट इंस्टॉलेशंस को शायद अटैक किया. उस दिन मैं एक टीवी शो देख रहा था. I mean, maybe I can name people. I don't know if I should or not, but there was a TV show where a sitting senator was in a show, and they said कि the comparison was made कि एक इंसान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, तो उनको आप वो खुलेआम घर पे आराम से मिलते हैं. These are facts, right? Many people who were at the protest, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया या पाकिस्तान की एक और सियासी नई जमात ज्वाइन कर ली है, वो आराम से अपने घर में बैठे हैं. They have the freedom of movement, and other people don't. So ये जब आया तो कहा गया कि जी लेकिन उन्होंने अटैक नहीं किया. The problem is कि खतीजा ने भी अटैक कभी भी नहीं किया, किसी इंस्टॉलेशन को नहीं किया, nor has she ever called for it. And any time that a court of law has looked at it, in fact, अगर आप हाई कोर्ट का बेल ऑर्डर देखें, वो बड़ा clearly कहता है that the prosecution's own evidence. Now we contest that evidence, but on its own evidence, the prosecution's case was that she was standing on the road outside, and there is no recovery from her. There is no arms or anything from her. There is no sense of violence or arson or vandalism or entering any public or private property. And yet, in the public imagination, there's a certain number of people, I don't know why, her political opponents or people who have, I fail to understand what it is, but there is a consistent effort to try and push the narrative that she somehow attacked an installation. And it's just not. It's against the record of every case that's been heard so far. अच्छा, अब जो लेटेस्ट हुआ है वो ये कि इन्होंने एमपीओ लगा दिया है, मेंटेनेंस ऑफ जी पब्लिक ऑर्डर लगा दिया कि ये जो बंदी है ये थ्रेट है, बस ब्लैंकेट जी थ्रेट है. बट लेट्स ब्रेक इट डाउन. देखें, हम में से बहुत सारे लोग हैं who are just now catching up with this कि क्या हो रहा है. So let's break it जी down. This is what we know. Khadija Shah is almost 40, in her early 40s, mother of 3, very successful designer, comes from a fantastic background. ठीक है, ये चीजें हमें पता है. अब कुछ लोग कहते हैं कि ये भाई बहुत एलीट है, अशराफिया है, ये she needs to be made an example of. But forget that, that's politics. Run me through the legalese. पहला केस क्या था, जल्दी से बताएं. ट्विटर साइज मुझे चाहिए आपसे. पहला केस क्या था, किधर खत्म हुआ है, दूसरा केस, because 4 cases है ना, she's gotten 4 different cases. तो जी पहला केस ये पहला, था दूसरा, कि तीसरा, चौथा. पहला केस ये था कि जी कोर कमांडर हाउस वाले जो इवेंट है उसके अंदर वो इन्वॉल्व हैं. They tried to say that she was part of the crowd that entered the house, but there's no evidence, no video evidence of that at all. She never entered that property. She wasn't there, and there was no evidence of any violence. ठीक है, That was the first case, Core Commander. ठीक है. The दूसरा, second case was Askari Towers, Liberty. कि जी वो Liberty में थी. So obviously the two cases are contradictory to each other. अच्छा, hold There on. is तो no एक पहला केस कह रहा है कि she's in Core Commander House, which is in Kent. The second case is saying कि she's in Askari Towers on the other she's side in of the Askari. city in Liberty. She is in जबरदस्त. Askari Towers, yes. अच्छा, Okay. जबरदस्त. अच्छा, And so वो apparently पूरे लाहौर शहर में घूम रही थी उस वक्त. Anyway, so Askari Towers, there's again no evidence. This case comes 40 days later. okay, No evidence, no video evidence, no CCTV footage, nothing at all ठीक है, that shows this. And so that's the second case. okay, The third case then says, on the day that she gets her bail, the third case says कि जी हमने मेन मार्केट से 3 लोगों को उठाया. We don't know who they are. उनमें से एक ने कहा कि मैं उनका खानसामा हूँ, और उनके घर में मीटिंग्स होती थी, और वो उन्होंने मीटिंग्स में ये कहा था कि अगर इमरान खान को अरेस्ट करें तो आपने जाके जलाओ घराव करना, इंस्टिगेशन करना. Now nobody knows who this person is, and he's not at all anybody related to them. They picked a random person off the street ठीक है. and they said इन्होंने हमें पुलिस में ये कहा है. Now अच्छा, the law is that that's not admissible in evidence, and when we went to court, that's the case on which the High Court also took contempt of court notice. ठीक है. So that's the third case, राहत बेकरी वाला, जिसको कहते हैं कि जी उन्होंने राहत बेकरी के अंदर जो गाड़ी जली उसके अंदर वो इन्वॉल्व थी. अच्छा, And the fourth case
is under the Prevention of Electronic Crimes Act, जिसको हम पीका कहते हैं, ठीक है. So उसके अंदर उन्होंने कहा, FIA ने कहा कि जी इन्होंने पीका की अमेंडमेंट की, पीका के ऊपर उन्होंने ऑफेंस लगाई. Sorry, this is important, so I'm just gonna say this very clearly so that people understand it. They said she was accused of violating a provision of the PICA law, okay? जो एक information law है, which is an information law, information it's an safety law. electronic crimes act के ऊपर है, ठीक है? ठीक है. So it's information systems को अगर आप करें, the provision that they applied is called cyberbullying, okay? Section 24A. Now cyberbullying का मतलब, cyberbullying की उर्दू is के इंटरनेट पे बदतमीजी करना. आपने इंटरनेट के ऊपर किसी इंसान को आपने जिस तरह से बुली किया हो या हरास किया हो या थ्रेटन किया हो, ठीक है? अच्छा, जो मजे की बात है वो ये है कि जो साइबर बुलिंग का सेक्शन आया है कानून के अंदर, वो पीका अमेंडमेंट जुलाई ऑफ 2023 में आया है. जो कानून 2023 जुलाई के अंदर came on the statute book, she was already in jail at that point in time. That law cannot apply to events that happened 2 months before it even became law, right? So that's the I guess the strength or the lack thereof or the thinking behind these cases. So FIA वाला case आया चौथा, उस पे we said this to the court and the court deleted that offense and we received bail also. So these are the 4 offenses. There's Court Commander House, there's Askil Towers, there's Rahat Bakery, what is commonly known as, and then there's these FIA social media usage, her Twitter account, her alleged. अब चारों जो केसेस हैं, they have been disposed of. आपने चारों केसेस में bail secure कर ली है. See, the cases are there, but we've gotten bail. अच्छा, so there's no reason for her to be inside behind bars. Okay, but अब ये जो MPO लगा है, what are the implications of this? इससे क्या होगा? MPO के बारे में हमें बताएं कि MPO क्या होता है. और ये DC ने अब पहले FIA इन्वॉल्व था, पहले राहत बेकरी का खानसामा इन्वॉल्व था, पहले अस्करी टावर्स इन्वॉल्व था, कोर कमांडर इन्वॉल्व था. तो अब DC को क्या तकलीफ हो गई है? How is she a threat to the public order? जी, so MPO का जो order है, so basically what is an MPO? MPO says is a maintenance of public order. It's preventative detention. So there's no case against you, but we just think that you're going to be a threat to public order. So to prevent public order breaking down, we're keeping you behind bars. 1961 का कानून है, अयूब खान के ज़माने में आया, and so it's an Ayub era law, and it basically results in a person being detained for a period of time. In Khadijah's case, 30. Preventatively, which means that she is not allowed to, according to the rules, it's very strict, and there's essentially she's kept in confinement. So the idea is that she stays in Port Lakpat jail for right now, but there is no case against her. अब जो बुनियाद DC ने बनाई, वो DC ने बुनियाद ये बनाई कि जी ये 3 मुकदमों में मुलव्विस थी, इन 3 मुकदमों में इनके खिलाफ एविडेंस भी इकट्ठी की गई है, जिसके अंदर ये हमें लगता है कि ये लोगों को बहुत उकसा सकती हैं, और क्योंकि ये लोगों को उकसा सकती हैं तो लोग जो है बहुत सादा जो है जराइम पेशा लोग या जुर्म कर सकते हैं सोसाइटी में, मुआशरे में, इसलिए ताकि ये लोगों को ना उकसाएं या ये इस तरह का पब्लिक ऑर्डर इवेंट ना क्रिएट करें, हम इनको नजरबंद करें. अब प्रॉब्लम इसमें क्या है? प्रॉब्लम इसमें ये कि है कि जो ऑर्डर DC साहिबा ने किया है उसमें बुनियाद इन्होंने बनाई है कि जी ये 3 केस इनके खिलाफ हैं और इसमें ये एविडेंस है, देयर इज नथिंग न्यू. अब 3-4 मैंने आपको जैसे कहा 3 कोर्ट्स ऑफ लॉ ने उस एविडेंस को देख के ये फैसला रीच किया है कि जी डिस्पाइट द पेंडेंसी ऑफ द केस, जब तक इस केस का फैसला होता है इनको बिहाइंड बार्स रहने की जरूरत नहीं है. सो ए कोर्ट हैज लुक्ड एट द एविडेंस and looked at the cases and decided that she can be on bail and while these go on. How is it possible कि एक डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर जो है वो एक कोर्ट ऑफ लॉ की जो असेसमेंट है उसको बेसिकली ओवर रूल कर दें ऑन द बेसिस ऑफ नो फ्रेश मटीरियल और अदर मटीरियल बिफोर हर? एंड माइंड यू, one of the cases that they rely on,
The High Court itself has taken contempt of court notice that how is it, this third Rahat Bakery case, the High Court took notice of it. They summoned the capital city police officer, they summoned the IG Punjab, and they asked for an explanation how a person could be added into a third case when these officers had said that there are only 2 cases against her. तो जिस केस के ऊपर हाई कोर्ट ने कहा है कि आपकी रिपोर्ट नॉट सैटिस्फैक्टरी है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर फिलहाल those proceedings are ongoing, वो डीसी साहिबा, how can she make that a basis to say that she is a threat to public order? It's beyond reason. अच्छा, beyond reason पे चलते हैं. I think let me help you with, you might not be able to say it because you are her attorney, magar let me help you with some of the reasons. One of the reasons, at least in my opinion, I may be completely wrong, counselor, is कि Khadija Shah को target perhaps इसलिए किया गया है क्योंकि she has become a symbol of the women's role in this current struggle for democratic freedoms. मतलब कि वो इसका आप कह सकते हैं एक पोस्टर गर्ल बन गई हैं, पोस्टर चाइल्ड बन गई हैं इस पूरी स्ट्रगल का, जिसमें जो पाकिस्तान की खवातीन हैं वो इन्वॉल्व हैं. अब इस सब में एक ये रीजन हो सकता है. दूसरा रीजन ये है, जैसे हमने देखा कि फ्रॉम मरियम नवाज टू अता ताड़ड़ to different PMLN leaders, including PMLN activists, उन्होंने उन्हें डॉक्स किया है, मेंशन किया है, टारगेट किया है, परसिक्यूट किया है, सोशल मीडिया पे किया है, जलसों पे किया है, नाम लेके धमकियां दी हैं, नाम लेके कहा है कि ये सब है. मगर what one wonders is कि जो powers that be हैं, क्या वो इसमें complicit हैं? मैं पंजाब हुकूमत की बात नहीं कर रहा, वो तो शायद प्रॉक्सी है नवाज रेजिम की. But I would like you to put your political hat on at this point and be clear कि क्या ये एक politically motivation अगर नजर आती है तो आप political motivation क्या कोर्ट में counter करते हैं? How do you counter that and do you cite that? Because it's quite clear to everyone in Pakistan and even out of Pakistan right now that this is a politically motivated case. Gee, so I'll put my political hat on. The legal argument that we make is that it's a politically motivated case. It is a politically motivated case. There's no doubt about it. 100%, it's a politically motivated case. But let me put my political hat on for a second. We see people who are very close to a certain political party that you mentioned, their Twitter accounts actively called for Khadija to be prosecuted and persecuted and taken action against. Okay, people who are very close to their current political leadership, as you mentioned, there are people who called for her and took her name in public rallies and then press conferences, official spokesperson of a political party. Now, what are these? ये क्या चीजें? एक इंसान का मुकदमा अभी है पाकिस्तान की आइन के अंदर, पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं जब आप ये कहते हैं? आप क्या सिग्नलिंग कर रहे हैं जब आप ये कहते हैं? आप पब्लिक के अंदर क्या कर रहे हैं? इट्स अ सिग्नल टू गो आफ्टर इट. It's a signal to send somebody. It's a signal to put a target behind somebody's back, and there is no doubt about it. There is a target on her back. Now, the second thing, what is she a symbol of? I'd like to ask you. At the end of the day, people say that she's become a symbol. Now, why has she become a symbol? All I can think of is that there's many reasons that I can think of. But when it comes down to it, what is she really a symbol of, Wajahat? She's a symbol of the fact that she refuses to sign away her rights. She has the right to a fair trial. She has the right to prove her innocence. She has the right to maintain her innocence, and she has the right to have the evidence taken against her. She has the right not to confess to a crime that she did not commit. So what is she a symbol of? Why do people think that she is a symbol? Because of one thing, the fact that she is standing for the fact that she believes in the rights that are granted to her in the Constitution of Pakistan. And she wants to hold on to that promise rather than give in to the cynical belief that the Constitution means nothing and the people who don't care for the Constitution control everything, and that at the end of the day, it is those people that will win and not the Constitution. So why do people think about her? Why do people flock to her? What is she a symbol of? The fact that she still believes in the Constitution of Pakistan, in the right to a fair trial, and in the democratic freedoms that belong to the people of Pakistan, that rightfully belong to the people of Pakistan. She should not be a symbol. This should be every single one of us, not just her. And the fact that it has to be her is a point of concern, and for us to introspect and to see that is it right for us to call upon other people to display more courage than is necessary for them, because we are not willing to display that courage.
And that's it. At the end of the day, that's where the people find it. That's why people think that she continues to defy a cynical expectation in Pakistan's politics that everything is controlled and nothing gets done by the merits. Wow, that's very passionate. While you were speaking, dozens of comments, बहुत सारे लोगों ने बोला है. And a lot of people are saying, Samir Khosa, young people like you, I can't say it's young people like me, but young people like you or younger are saying, I'm older than I look. So. I hope so, counselor. I hope so for your legal purposes, in court especially. मगर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई I'm leaving, I'm going. Now, Khadija Shah define करती है एक पाकिस्तान की एक success story को. A woman who's made a brand out of pretty much nothing. She's made she's left quite a legacy behind. मगर in terms of where this case is going versus what she stands for, जो भी आपने बोला है, help draw it out for me here. क्या हम expect कर सकते हैं कि ये elections तक चलेगा ये मामला? Because ये खदीजा अकेले नहीं है. 2 दर्जन, कम से कम there's 2 dozen women out there with her who are going through a similar ordeal, who are involved in May 9th, or allegedly rather, pardon me, allegedly involved in May 9th. So ये election तक चलेगा, ये New Year's तक चलेगा, ये छोटी ईद तक चलेगा, ये अयूब खान part 2 तक चलेगा. ये when is this going to end, do you think? Because अगर politically motivated है, जैसे आप कह रहे हैं, तो इसकी कोई आपको political yardstick नजर आती है जिधर इन सब लोगों को breathing room मिलेगा या नहीं? देखें, that's a lot for analysts like you to say, and I think because there's a lot of factors there. What I can say is that actually this should have ended a long time ago, because as a lawyer, as a person of the law, as a person who's going to think about these cases, it's not just her. There are people here. There are 12-year-olds taking care of 2-year-olds right now. Okay, there are husbands who have died. Okay, there are 5-year-olds who are meeting their parents in an anti-terrorism court. Okay, no 5-6-year-old should have to go through this. No 12-13-year-old child who should be in school should have to go through this. Okay, no child should have to go and explain, and children after children should have to go and explain why their parents are, is this happening or is that happening, or to explain rumors and to come clarify in short meetings that these are the rumors that I've heard. So the fact of the matter is that this can go on for people who want to go on. I really can't say, and I really don't know. There can be any number of speculations. You can say election tak chalega, election ke baad bhi, I don't know what the situation is. What is clear is that people want this to go on, but if sense were to prevail, this should have ended a long time ago. Samir Khosa, partner at Access Law, attorney for Khadija Shah. Thank you for joining us this late from Lahore. आप चलते चलते मुझे ये बताइए कि MPO को कैसे चैलेंज करेंगे अब जो लगा है? Sorry, आपकी आवाज कटी थी, but I think you're asking कि MPO कैसे challenge होता है. So that is challenged in the High Court. ठीक है. और if I may, कि MPO अगर लगा रहा तो इनके पास इनके टूल बॉक्स में और कोई ऐसे हथकंडे हैं? Do they have more tools to throw, more weapons to use against you and your client? I'm not going to give them ideas. Samir Khosa, glad you have your sense of humor. Thank you for fighting the good fight. No problem. Thank you to you also. Thank you for having me.